हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्यूडिशल एकेडमी देशुदीप। तो आज हम लोग बात करेंगे कि आपको एलएलएम और जुडिशियल एग्जाम का प्रिपरेशन साइड बाय साइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर करना भी चाहिए, क्यों करना चाहिए। ओके, अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड लेट्स टिक डीप अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक बिकॉज लॉट ऑफ स्टूडेंट दे आर कंफ्यूज्ड अबाउट इट कि हम लोग को जुडिशियल एग्जाम देना है, एलएलएम एग्जाम देना है, इसमें अप्रोच अलग है, इसमें अप्रोच अलग है, क्या करें क्या नहीं करें। ऑल दोस थिंग्स आर देयर and that actually bother each one of the student who go for both the exams. So it's very important. We should bifurcate and we should know the reason if we are going for it, right? So let's start it. Now, first and foremost thing that I want to talk about कि judicial exam preparation के लिए maximum law students prepare करते हैं। वो आपको भी पता है, आप भी शायद कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। आपके भी deep down में आपको याद है कि मुझे जज बनना है। Absolutely fine, you are very welcome for it. But only thing is that कंपटीशन, यू नो कि हर स्टेट जुडिशियल एग्जाम में कितना कंपटीशन होता है, कितने कट थ्रोट कंपटीशंस होते हैं कि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, लॉट ऑफ लॉ स्टूडेंट्स आर गो फॉर इट एंड ओनली फ्यू सिलेक्टेड फॉर इट, राइट। नाउ इन दिस केस आज हम लोग बात करेंगे कि एलएलएम एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज दैट यस, यू शुड परस्यू योर एलएलएम एग्जाम प्रिपरेशन अलॉन्ग विद द जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन। आपको करना चाहिए और उसके पीछे मैं पहले रीजन बताऊंगा कि क्यों करना चाहिए। Now, first and foremost, this reason that I'm going to talk about is that many students whoever I have communicated कि जिनका मेन मकसद जुडिशरी है पर उसको एलएलएम का प्रिपरेशन भी वो लोग किए थे, ठीक है। एंड फॉर देम व्हेन आई टॉक टू देम आई गॉट टू नो इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट, that is कि maximum student told me कि after doing the LLM preparation and going for the judiciary exam, basically for them 60 to 65% their basics and procedural laws are done. Okay, you know basics, how important is it for judiciary, you know procedural laws how important depending on the state to state. Now more or less बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स बेसिकली एलएलएम एग्जाम के प्रिपरेशन के टाइम आपका 60 to 65% प्रिपरेशन हो जाता है। ओके, एंड दैट्स व्हाई एलएलएम एग्जाम प्रिपरेशन एंड जुडिशियल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आप अगर सोच रहे हो जाना है नहीं जाना है तो आई विल टेल यू कि गो फॉर इट, एंड उसके पीछे आपको और सॉलिडिफाइड रीजन मैं बताऊंगा डाउन द टाइम। नाउ सेकंड reason that I'm going to talk about कि why judiciary and LLM exam preparation you should go and approach it simultaneously. The second is that after the pattern change in CLAT PG जिसमें बहुत सारा जजमेंट्स पढ़ना पड़ता है, रिसेंट हो लैंडमार्क हो, बहुत सारा जजमेंट्स पढ़ना पड़ता है, and as a result each and every LLM exam aspirants they have to read lot of judgments and that's where the main conflict is। क्योंकि जुडिशियल एग्जाम का जो सिलेबस है, एलएलएम का सिलेबस है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ओवरलैप भी करता है, बट क्लैट पीजी के मामले में बहुत डिफरेंशिएट हो जाता है कि जहां पर आपको जजमेंट्स पढ़ना पड़ता है। नाउ यहाँ पर जो मैक्सिमम स्टूडेंट जो एलएलएम एग्जाम क्रैक कर चुके हैं, जुडिशियरी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे कम्युनिकेटेड दैट the most important aspect is that while reading the judgment they got to know lot of about law, in-depth knowledge about the law, they got it. The second thing, they know how to read the judgment, okay, and the third thing, they know how to analyze the judgment, what is the important part of the judgment, what is not important part of the judgment. The reason is very simple, that judgment is an integral part of a judge, right? Down the time you will be so much engaged with जजमेंट इटसेल्फ। तो एज ए रिजल्ट अगर आपको पहले से ही कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना होता है, नॉट ओनली लिखना पर्टिकुलरली बट आपको पूरा कॉम्प्रिहेंशन पता चलेगा, जजमेंट कैसे मोल्ड किया जाता है। व्हाइल यू रीड 50 60 100 जजमेंट्स यू विल गेट टू अंडरस्टैंड इट। सो आप ही बताओ ये आपको हेल्प करेगा या नहीं कि एलएलएम एग्जाम के एक बार आप प्रिपरेशन करोगे क्लैट पीजी के, उसके साथ अगर आप जुडिशरी का प्रिपरेशन करोगे। यू आर गोइंग टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स यस और नो। नाउ थर्ड थिंग that's very much helpful is that कि जुडिशियल एग्जाम के जो कंपटीशन है वो बहुत टफ है, ठीक है, एंड मैक्सिमम स्टूडेंट जो जुडिशियल एग्जाम में बैठते हैं वो आपको ही पता है कि क्यों टफ है, राइट। नाउ आई एम नॉट अंडरमाइनिंग योर कैपेबिलिटी, आई एम नॉट saying you are not going to crack it, you definitely are going to crack it. Now in this case the one very important factor and the reality that has to be checked is that a competition is cutthroat. Everyone is giving more than their 100%. आप किसी भी पूछो, everyone is going to give their more than 100%.
Now in this case आपको पता नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा भी या नहीं 100% देने के बाद. So in this case, as a career planning perspective, you need to be realistic. You need to be realistic. There is no every maximum law student desire to be a judge. उसमें कोई problem नहीं है, but you have to be realistic at the end of the day, right? And in this case, आप अगर LLM एग्जाम एज ए बैकअप रखते हो, ओके, ना उसका बहुत फायदा है, बिकॉज LLM इज डेफिनेटली गोइंग टू गिव यू a one backup regarding academician, researcher, corporate placements, the other different opportunities that may open up. Okay, nonetheless, here I am going to talk about one very important thing. Jurisedge is organizing one very important career planning workshop for all the LLB student and LLM student, and for them, the people who haven't registered it yet, kindly register below. इसमें आपको सब कुछ डिटेल्स में बताया जाएगा आपको कैसे while you are learning you can be able to earn. Second thing, we will talk about the placements, we will talk about the freelancing, we are talking about the fellowships, we are talking about the PhDs, we are talking about the LLM, we will talk about the dissertation, all the things whatever you require for your after LLB journey, and that will be talked about by the experts itself. Okay, so the people who are expert in their field, they have cracked it, they have done it by themselves, they're going to talk about it. So please, the link is given below, register for it. Now what I was talking about while taking the LLM exam preparation, आपका सबसे important चीज जो आपको ये होगा एज ए बैकअप, आपका एक दरवाजा खुलेगा. सपोज इन केस गॉड फॉरबिड ऐसा ना हो कि आपके साथ कि आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे हो, जुडिशियरी एग्जाम 1 साल 2 साल हो गया, वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का होता है, दैट्स अ रियलिटी, इजंट इट? सो इन दैट केस यू विल फॉल बैक ऑन टू समथिंग, you will fall back to litigation. I am not undermining the litigation also, but this is another option that you may open up, because litigation also you need to grind for a few initial years, where in case in LLM or in UGC this option or the placements, this option will be there for you, okay, in your difficult situation. So that part is there. Now another important aspect that I'm going to talk about is, and another important reason, is there are a lot of students who are a bit confused. Should I go for it? Should I not go for it? What to do? What not to do? For them, I'll definitely tell you, LLM exam is going to be very, very fruitful for you. You are going for the judiciary, fine, go for it. Now the next important thing, go for the LLM exam preparation also. Why? The reason is very simple. The reason is that if the judiciary is a big test, right? Is the competition is very high and cutthroat competition, and LLM, if we, as per the competition level, if you put it here, at least if you go and attempt this exam, you'll get to understand about your preparation. आपको आपके preparation के बारे में पता चलेगा, आपका basics कैसा है पता चलेगा, आपका procedural laws का preparation कैसा है पता चलेगा, आपका comprehension कैसा है पता चलेगा, आपका reading analysis कैसा है आपको पता चलेगा. All those things that determine at least कि आप बीच में आपके preparation के बीच में पता चलेगा, क्योंकि जुडिशरी में मैक्सिमम स्टूडेंट्स दे क्रैक इट विदिन 2 years 3 years डाउन द टाइम. यू माइट क्रैक इट इन 1 year, दैट्स टोटली डिफरेंट थिंग, बट द जनरल ट्रेंड आई एम टॉकिंग अबाउट. तो आपको 1 साल में पता चल जाएगा आप यहाँ पर हो LLM एग्जाम प्रिपरेशन, LLM एग्जाम अप्रोच करने के बाद. यू माइट क्रैक इट, माइट नॉट क्रैक इट LLM एग्जाम, वो अलग बात है, बट एटलीस्ट यू विल गेट टू सी कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और जब आपको पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन का लेवल ऐसा है LLM एग्जाम के बाद, देन यू माइट फास्टर योर प्रिपरेशन, हू नोस, राइट? तो आप उसको ज़्यादा फास्ट कर दो. उसके बाद कहाँ पर कौन से एरिया में आपका ज़्यादा ये करना है, फोकस करना है, यू कैन फोकस डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द एग्जाम, राइट? LLM एग्जाम, तो LLM एग्जाम माइट बी स्टेपिंग स्टोन फॉर योर जुडिशरी एग्जाम, राइट? सो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. आप ऐसे इसको अप्रोच भी कर सकते हैं. So these are the reasons for that I'll definitely recommend, and also the students who have cracked it, the LLM exam, but their main focus is judiciary, they have told to pursue the LLM exam preparation simultaneously and go for it. Now there are a lot of people who are very focused for the judiciary, they don't want to check it for any other things. For them, I'll tell you, if you want to go wholeheartedly for a judiciary preparation, you can go for it. But one thing, make sure, ask your parents, okay? Ask each one of you who are close and who are very close, near and dear ones. They can fully give you the time, okay? There are many cases that people don't want to give you the time. That's the most important thing. The judiciary, you might crack it, might not crack it in 1 or 2 years.
it will might take 3 years, you never know, and that is the only thing, support. Okay, support from your closed one. If they are supporting, go for it, no problem, absolutely no problem. Okay, and all the very best for your judicial exam and the LLM exam preparation. But these are the reasons that I have told you regarding it. If you found it helpful, definitely share with your other friends and give it a thumbs up. And also another important thing, LLM crash course is live. If you haven't checked it, then we are going to start it from the basics itself. आप उसमें आपको बेसिक से करवाया जाएगा, बहुत हेल्पफुल होगा. यू डोंट नीड टू वरी. द स्टूडेंट्स हु आर स्टार्टिंग टू प्रिपेयर, दे आर गोइंग टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशन. फॉर देम इट विल बी वेरी वेरी वंडरफुल. आपको जीरो से स्टार्ट करवाया जाएगा, बेसिक्स, जजमेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग दैट विल बी डन फॉर यू. और उसके साथ हार्ड कोर मटेरियल, सॉफ्ट कोर मटेरियल, मॉक, सब्जेक्टिव आंसर गाइड, ईच एंड एवरीथिंग दैट विल बी इंक्लूडेड. आपको जो चाहिए, each and everything that will be there for your LLM exam preparation. The link is given below in the description. Kindly check it out and आप demo class के लिए apply कर सकते हो. So in this video I have talked about whatever I have talked about. The next video I'm going to talk about next information regarding LLM exam or UGC net. Let's see. So until then, thank you. See you soon.